सेटल, स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट? चलो, व्हाट आर रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट आर रिसोर्सेज? क्या होता है? एनीथिंग दैट इज ऑफ ऑप्टिमल यूज टू दी ह्यूमन, दैट आर रिसोर्सेज, है ना? किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, राइट? सो इन हियर इन ज्योग्राफी वी विल लुक एट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ठीक है? इकोनॉमिकली विच आर प्रॉफिटेबल फॉर अ नेशंस, दैट एनहेंसेस द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द कंट्री एंड इट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, है ना? तो लास्ट टाइम व्हाट वी डिड बॉक्साइट, आई गेस बॉक्साइट वी हैव डन, bauxite and copper we have completed, right? We located in the map, also we have written notes. Today we will start with the important resource, that is iron and iron ore. चलो लेट्स लुक एट दिस, एक बार इसको देख लेते हैं. व्हाट आर द रिसोर्सेज इन केस इन एनी मेन समवेयर इफ दे आस्क व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड ऑल. ओके, सो रिसोर्सेज वी कैन कैटेगराइज इन टू फॉर्म्स, नेचुरल एंड ह्यूमन. नेचुरल दैट इज एग्जिस्टिंग इन द नेचर, है ना, एंड ह्यूमन इज दैट इज क्रिएटेड, आर्टिफिशियल. ओके, लाइक वी ह्यूमंस गेट जनरेटेड. अगर हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, इफ यू आर नॉट स्किल्ड, है ना, बट विल बी यूजफुल टू एनीवन, टू आवर होम्स और टू इंडस्ट्री एनीवेयर, है ना. सो स्किलिंग इज नेसेसरी टू बिकम रिसोर्सफुल, ठीक है. इन हियर मेनली वी विल कंसीडर हियर नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. टेल मी रोहित, व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल? Rohit. Non-renewables are those resources which cannot be renewed very fast. Which cannot be renewed only, है ना? It can be renewed because after a long period it will get replenished, finish हो जाएगा, ठीक है. It doesn't have any specific continuous source. Okay, so like coal is there, if there is a limited quantity in the reserve, it will get finished, exhausted, है ना. And renewable means that can be regenerated like water, है ना. And there are other words also, conventional and non-conventional. What does they imply? Conventional resources and non-conventional. इससे related नहीं है, ये अलग है, non-conventional. ठीक है, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है? Conventional source of energy and non-conventional source of energy. What you can imply from these words? Conventional means the resources or sources of energy which we are continuous in use, जैसे कोल, पेट्रोलियम, जो हम कंटिन्यूसली यूज करते आ रहे हैं, है ना. नॉन कन्वेंशनल मीन्स विच इज नॉट इन यूज करेंटली बट इट इज टेकिंग प्लेस फ्यूचर में, अभी हो सकता है, लाइक सोलर एनर्जी, है ना, टाइडल, जियोथर्मी. कन्वेंशन कहते हैं ना जो सदियों से चला आ रहे हैं, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम यूज करते आ रहे हैं. पेट्रोलियम हम यूज करते आ रहे हैं, डीजल इंजन, राइट. सो दे आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल ऑन विच वी आर डूइंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी is being developed so that we can make optimum use of that. Non-conventional, which is not being used past but it will be used in coming years. Here we can have solar energy, geothermal, hydrogen energy. Okay, getting the difference between conventional and non-conventional. And renewable and non-renewable means, renewable you can write continuous flow, there is like wind, water, solar energy, right. And in that another category is natural vegetation, forest and wildlife, biological. And non-renewable में that is recyclable metals and non-recyclable that is the fossil fuels. These are the major bifurcations. If you want to write, you can write this chart. Do you want to write? You can write. इसमें एक बार डिफरेंस बताना. Continuous flow and wind and biological. Where? Continuous flow मतलब renewable they goes on continuous moving, like if there is a water flow it is moving, right. Through the movement only it is generating the electricity, right. That is generating energy because of the movement only. Sun, solar energy is moving, wind energy is moving, geothermal energy is the movement of flow of energy is there. ये imply करता है यहाँ पे, ठीक है. Water is continuous. Water is also, wind is also continuous. क्योंकि उस समय electric. Hydrothermal energy is there, right. Hydroelectricity generators are there, right. An example of biological. Biological, humans को जला दोगे एनर्जी आएगी ना. Coal, natural. Okay, I'm saying you can take petroleum example, plant. Okay, how petroleum get? From where we get energy? यहाँ पे we are talking about resource in terms of energy generation. Okay. Don't write human, don't take human as an example, okay. Biological you can write natural vegetation, forest. What happens when you burn the forest and plants? They are also source of energy, right. Firewood, timber, getting
This is demarcation with respect to the natural resources. Have you written? Okay, let's look at another. 1 minute. Okay. Institutions means buildings, whatever we build. Organizations that we are working in, humans, like school, colleges, that institutions. Okay. They will imbibe a quality in us, nice skill in us. So that will be they are generating resources, human resource. Quantity means numeric things. Quality means what quality of skill resource we are getting. BTech ho, and a quality of human resource that is being generated. Getting different doctors, lawyers, professionals. They are also a type of resource. Both are necessaries. Human resources necessary to optimize this natural resource. Scientists are created, then only they can extract resource, iron ore from this. Tools are generated, tools are created. Humans are creating the tools and machinery, right? So that resource is used to optimize this natural resource. चल वुड है, हाँ लकड़ी है, हाँ जी ठीक है, वुड से हमने वो बना दिए उसके पिलर्स, तो वो क्वांटिटी में मतलब पिलर्स बना दिए हैं, मतलब जैसे हमने 4x से लकड़ी लिया, ठीक है, लकड़ी से हम गोल गोल वो बनाते हैं ना, लॉग्स, वुड लॉग्स, हाँ। तो अब वो हम यहाँ पे क्वांटिटी, ह्यूमन क्वांटिटी की बात हो रही है, नंबर ऑफ लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, दैट इज ह्यूमन की बात हो रही है वहाँ पे लकड़ियों की क्वांटिटी बात नहीं हो रही, यहाँ की ह्यूमंस की क्वांटिटी और क्वालिटी की बात हो रही है। ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से, हाउ मेनी डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, व्हाट क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इज गेटिंग क्रिएटेड, दैट रिसोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, For example, if we have 5 doctors, so quantity is 5. हाँ, And quality is their doctor, each doctors have different specialization, MBBS from different institutions. So quality of different होगी, 5 होगी. क्वालिटी अलग है, स्पेशलाइजेशन अलग है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होगा, समवन विल बी हार्ट स्पेशलिस्ट, ओके, सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, ओके, सिंपल। चलो, अनदर थिंग दैट इज देयर, अनदर डिमार्केशन दैट वी हैव विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज, मेटल्स, ठीक है, मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मिनरल्स? स्टेटमेंट, टेल अ स्टेटमेंट, टेल अ लाइन, व्हाट इज अ मिनरल? डिफरेंस, अच्छा टेल मी डिफरेंस इन रॉक एंड मिनरल। आई थिंक आई हैव सेड दिस, डिफरेंस rock and mineral. What is the difference between rock and mineral? Minerals can be used by human resource, but rock cannot be. Wrong answer. It went through various process now. Heat and pressure, some went through. After that, they dropped down into minerals. That rocks has different composition of different minerals. This is the raw, ठीक है? This is a raw. This is a raw rock that is coming from inside the earth. Okay, raw form. ठीक है? Minerals, when it is having specific composition, specific types of minerals are there. ठीक है? A natural substance having organic and inorganic components. Like if it is a mineral of, suppose, which it is aluminium. Okay. So it will have all the components or chemical composition of aluminium. ठीक है? Write one sentence. A mineral. You're drawing this. पहले समझ तो लेते क्या होता है ये, पहले ड्रॉ करने लगे। I am giving sufficient time. I am giving time. Okay. चलो बना लो. Draw it first.
डन, चलो राइट वन लाइन. अ मिनरल, a mineral is a natural substance. A mineral is a natural substance of organic or inorganic origin. A mineral is a natural substance of organic and inorganic origin with definite chemical and physical properties. With the definite chemical and the physical properties. Okay, understood the line? What single rock can have 2-3 types of minerals? ठीक है, it can have aluminium also, it can have other ores also. Okay, lead also, copper also, rock can have. ठीक है, but if you will categorize, you will polish it, you can refine it, then you will get specific type of mineral from that rock. Okay, what are the categories of minerals? One is metallic and non-metallic. We have studied in 9th 10th standard difference between metals and non-metals. ठीक है, what are the differences? Any two difference anybody remembers? What are the specific characteristics of metals and non-metals? Current can flow from metallic. ठीक है, simple. हाँ, current can flow through metals. They are lustrous, they are ductile. Lustrous है ना? They can be drawn into thin wires, right? Settle यार. ठीक है. And what about non-metallic means which do not have? Electrical. They do not pass, the electrons does not pass through them. Okay, they are non-lustrous. ठीक है, they cannot be they are brittle, मतलब they break easily, right? These are the distinguishes we studied in I think 9th and 10th standard only. So इसमें metallic में this is ferrous means, what is the word ferrous means? With respect to iron containing metals, and this non-ferrous means which do not have iron in them. This is the basic differentiation. Here in non-metallic we have fuel mineral and other non-metallic. ठीक है? Fuel means coal, petroleum and other things. Okay? Natural gases, gas and all. Okay? ठीक है, चलो. The most important natural resource that we will have to study is the iron ore. Okay? From fresh page we will look at the iron ore. वर्ल्ड मैप बनाना आया, एक बार बनाया था हमने क्लास में. एक बार बनाया. चलो, we will study the distribution of iron ore. Okay, look into the map. पहले हम देखेंगे first iron ore in the China region. What is Manchuria, Xinjiang, Shandong Peninsula. Specific map has been brought for you all. ठीक है, look into the map where it is. मैं दूंगी टाइम लिखने को. Okay, first iron ore in this is the China region. ठीक है, getting the location, this is Xinjiang, this is Shandong Peninsula. वुहान, ये अभी जरूरी नहीं है, ये वुहान न्यूज में क्यों था? This is the Xinjiang region. Getting the location is important. Location आप देखो, ये Shenyang है. ठीक है, so the location is very important. ठीक है, तो you will write 3 names. Okay, this Xinjiang, then Shenyang and this Shandong Peninsula. ठीक है, 4 names this Xinjiang also. 4 names for iron ore. दिखा? Getting the location, which is this location above India, this is China. ये चाइना का मैप है. स्पेसिफिक सिटीज का मैप में नहीं दिखेगा, ये नाम नहीं दिखेगा, इसलिए आप नाम लिख लो. ठीक है, इनके नाम लिख लो आप. लोकेशन स्मॉल बना के आप लोग अगर बना सकते हो तो मार्क कर लो. ठीक है, फर्स्ट डाउन अभी नाम लिख लो, फिर मैप में एक बार प्लॉट कर लेंगे. ठीक है, बच्चों में खौफ हो गया. खौफ की नहीं, समझने की बात है. अगर इमेज दिमाग में रहेगा तो यू विल बी इजी टू रिमेंबर, राइट? स्मॉल सा हाउ यू हैव टू ड्रॉ. ऐसे बनाना, इंडिया ऐसे बनाना, इधर से मैंने बताया था. दिस इज व्हाट यू विल ड्रॉ. ठीक है, 1 2 3 टर्न लेके ऐसे, फिर 3 जगह पॉइंट ऐसे बनाओगे. बस बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक तरीके से नहीं बनाना. गेटिंग reason, getting the region where it is located, iron ore in China. What are the 3 names? You start saying earning. Xinjiang, Xinjiang. This is Xinjiang. ठीक है, Xinjiang, same limited, different name, Chinese name. Okay, this is Shandong Peninsula and one is Shenyang. ठीक है, getting
Done? Manchuria. Where is Manchurian Plateau? Manchurian Plateau, Gobi Desert we studied. कहाँ, where it is located? सर हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, एशिया में है अभी. Where is Gobi Desert? मंचूरिया, मंगोलिया के पास. मंचूरियन प्लेट्यू we saw in the map. तो वहाँ पे there also we get the iron. Okay? मंचूरियन प्लेट्यू in Asia. मैप में देखो लुक इनटू द मैप. एशिया के मैप में देखो. मेन्यू के बगल में क्या लिखा है? दिस वन मेन्यू. यहाँ अनशन. ठीक है. दिस इज क्लियर नाउ. दिस प्रोविंस मंचूरिया भी ऐड कर लेना. ओके. नेक्स्ट इन द यूरोप. व्हाट आर द रीजंस? What is Ruhr, South Wales, Krivoy Rog, Bilbao and Lorraine. यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ है. This is the Europe map. This is South Wales and Midland. South Wales कहाँ पे है? यूक्रेन में. Getting this? South Wales 3 United Kingdoms के पार्ट थे. South Wales, Britain and which was the other? Wales, Scotland and England. What were the components? ठीक है. दिस इज दिस साउथ वेल्स एंड मिडलैंड. दिस इन दिस यूके. ठीक है. लॉरेन, लॉरेन वी स्टडीड इन द रूवर राइट. फ्रांस में था ये रिवर. ये रहा लॉरेन. ठीक है. रूर वैली इन जर्मनी. दिस इज जर्मनी. पॉलिटिकल मैप याद आ रहा है यूरोप का? दिस इज रूर वैली. रूर. ठीक है. पिरेनीज. दिस इज विच कंट्री? दिस This is Spain. France is this one. This is Germany, France, Spain. Okay. Bilbao is also in Spain. That's why we have done first political also and physical also. Both we have done. ठीक है. Here what it is? Krivoy Rog. This Kerch Peninsula, you know. Kerch we did. Yes. Kerch Peninsula, Kerch Strait. Yes, in Russia. Which river is this? Which sea is this? Tell me which sea is this? Who will tell? Black Sea. And near to Black Sea, what is there? This. What is this? Azov. Sea of Azov. What is the strait? There was a strait, right? It was like this. There was one strait. Again one small sea. Again strait was there. कौन बताएगा मुझे तीनों चीज? रौनक. स्ट्रेट ऑफ कर्च इज देयर. ओके. वो यहाँ पे था. स्ट्रेट ऑफ कर्च किसको कनेक्ट करता है? ब्लैक सी और सी ऑफ अजो को. चलो ये मार्क कर लो आप अभी आयरन ओर में. ठीक है. दिस इज द नेम. एंड हेयर व्हाट दिस इज व्हाट? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला था. फिनलैंड, स्कॉटलैंड, डेनमोरा, किरूना. ओके. यहां से लिखना शुरू करो. पहले पेरिनीज, सेकेंड बिल्बाओ, थर्ड लॉरेन, फोर्थ साउथ वेल्स मिडलैंड, फिफ्थ डेनेमोरा, सिक्स्थ किरूना. ठीक है. सेवेंथ रूर, एट्थ क्रिवॉय एंड नाइन्थ दिस कर्च. 9 locations in Europe. Written? Chalo, next. Let's move to the next. We will go to now. Which is this continent? This is, I don't know where is it. In Africa. There is not much iron ore in Africa, limited. Other resources were there, but iron was in very little amount. It was deficient in iron. Okay, we talked about different resources, diamond and all, but iron was not there. So here Morocco, Algeria, Tunisia.
in insignificant, not very large reserves. Okay, iron ore in Africa, and another name what you have to remember, second one Liberia, and third this Transvaal. Don't forget this Transvaal. Okay, 3 regions in African continent. This is Morocco, Algeria, Tunisia, second Liberia, ठीक है, and third one this Transvaal. This is in South Africa. South Africa is a country in African continent, so here it is Transvaal region. Can you show this in map also? समझ में आ रहा? How you will draw the Africa map and where you will locate? Getting the location also? चलो, here now in Russia. Russia में what are the regions? In the north, Ural region. Ural, you remember where we drew? Ural, boundary between Europe and Asia. This is the Ural region. Ural upland also, Volga uplands. ठीक है? Second one, first Ural. Second this Magnitogorsk. This is the Russian name, okay? Magnitogorsk. Second. Third, Angara. This is not in Russia, this part. This is in Kazakhstan. Which country is this? बताओ, which country? Kazakhstan. So this is Karaganda. फोर्थ वन. रशिया से अलग है ना, रशिया ऊपर, रशिया में वो दोनों है. मैग्नीटोस ये वाला रीजन है, दिस वन. समझ में आ रहा है विच लोकेशन वी आर टॉकिंग? दिस वन, दिस इज डिफरेंट. कारागंडा, KARAGANDA. This is also iron ore reserve. This is in Kazakhstan. जैसे ये नेमिंग है, तो इनकी ट्रिक क्या होगी जैसे याद करने की? ट्रिक तो मैप के थ्रू याद करना पड़ेगा. ट्रिक बनाना मुश्किल होता है. ट्रिक मुश्किल है. जैसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे आप लोकेशन याद रखो और नेम अपने आप याद हो जाएगा. आप एक बार पढ़ो, बोलो, मैप इट इन द मैप, मैपिंग करो, तभी याद होगा. निमोनिक्स इज नॉट पॉसिबल टू मेक निमोनिक्स इन एवरी सिचुएशन. ओके, कुद्रेमुख, दिस वन. ये इंडिया में 2 लोकेशंस हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड कुद्रेमुख. KUDUREMUKH. ये मैग्नीटोगोर्स्क, मैग्नीटो, MAGNITOGORSK, मैग्नीटोगोर्स्क. अरे दिस रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला, ये भी यूराल वाला, ये रीजन है. गेटिंग? दिस बोथ आर इन कजाकिस्तान ओनली. ये रशिया में है, अंगारा. छोटा नागपुर एंड कुद्रेमुख इन इंडिया. देन अफ्रीका एंड रशिया written. Which is this continent? At least you know the continent, right? North America. Look here. Famous Great Lakes we did. What were the Great Lakes? कोई नेम बताएगा? Karuna, you tell. Wait, Karuna, you tell. What are the lakes? ये names. एरिक नहीं है. स्पेसिफिक बताओ. हाँ, फिर Homs, you can do Homs. हाँ, we give that no many home. Vijinga. You tell प्रज्ञा. Next बताओ.
एरी, ओंटारियो, ओके, गेटिंग ऑल द 5 नेम्स. सो दिस मसाबी रीजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर आयरन ओर. ठीक है, पहला ये लिख लो, ग्रेट अमेरिकन लेक्स, ये मसाबी रीजन, फर्स्ट वन. ठीक है, मसाबी, MASABI. स्पेसिफिक चीजों का नाम. हाँ, ठीक है, दिस पोर्शन, ये वाला रीजन. Specific city by location, if you look, come here, this is the Oregon, this region, specific seat. Vermilion, this is specific reserve is here, specific iron ore reserve are located in, this is in Canada, this is in the boundary of Canada and USA, and this is the Labrador Shield, we did Canadian and Labrador Shield. इसमें क्या है, this is the famous name Schefferville, Canada में, and Labrador, 2 names. Next here, this side western of this here we did which desert we studied here? Tell me. Here we studied about one desert, right? What was the desert? This Nevada and California region. This region. Sonoran, correct. Mojave and Sonoran. These are the 2 deserts we studied this region. See, ठीक है? There only we have this ore called iron ore, Nevada and California. So write in your name. First one you can start from this Nevada, California. Second one Oregon. Third one Vermilion. ठीक है. Fourth one this Labrador. Fifth one Schefferville. Sixth this whole Great Lakes region, Mississippi Range. Seventh this Alabama. This is the Appalachian, near Appalachian Hills. Appalachian mountain ranges are here in the eastern North America. There we have this Alabama. Written? चलो next. This is which continent? South America. South America. In the north, what we have? This is which country? Which are these 3 countries? These small 3 countries, 3 triplets. Which is this? Ronak. ये कौन सी countries हैं? 3 countries. French Guiana. I'm asking to Ronak. Next 2 बताओ. Suriname. ठीक है. French Guiana, Suriname, then Guiana. ठीक है. चलो next, which is this country? Ronak, at least you tell this one. ये वाला बताओ कौन सी country? These 2 countries. आप सर, आप बताओ कौन सी कंट्रीज हैं ये? My name is Jatin. जतिन. I am just a student here. ओके, चलो ठीक है. चलो we will start with this location of this iron ore. First is Cerro Bolivar, Guiana Highland. This is the Guiana Highland we marked, right, in the South African continent. So first location of iron ore in South Africa you mark this one. This you can remember with Guiana Highlands also. Guiana Highlands, or you can write this Cerro Bolivar. Guiana Highland तो याद होगा, ये वाला यहाँ पे we marked. ठीक है. Second one Carajás. This is Brazil. This is Brazil. Okay. Carajás mines. ठीक है. These are the largest iron ore mine in the world. ठीक है. Carajás. Next one Itibira. This one, this is also important location. First this, second Carajás, third Itibira. ITABIRA. ठीक है. Minas Gerais, Brazilian Highlands. This is their local names, you can think. जैसे locally जो कहे जाते हैं ना, ये वो वाले नाम है, और हमने ऐसे पढ़ा Brazilian Highlands. We have studied Brazilian Highlands, right? So this is the name, scientific name, or we can say politically name given. Okay.
So the third one is this, and this first one, this here, Algarabo. Algarrobo. ALGARROBO. Miss, like we used to extract the iron ore and we sell it again and we bring back the refining. And what's the reason? Like we don't have technology. We don't have technology, we don't have such huge machineries also, but slowly we are developing capital infrastructure also. ठीक है, so we can process it in our own country. ठीक है. अच्छा, what is if we get iron ore, then what are the industries? Iron ore, what happens then if you extract an iron ore? Then what you get? You refine, and what you get? What is the important commodity? Steel. That is the most important for every industry. Okay, that's why this is an important strategic resource. If any country is having the steel से काफी चीजें बन जाती हैं. Normal day to use में we have stainless steel, right? डे टू डे लाइफ में कमोडिटीज क्या स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं हम लोग, तो इसी से ही आता है. काफी आयरन रॉड्स, हर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आयरन वगैरह यूज होता है, राइट? रेलवेज, हर फील्ड, इन एवरी इंडस्ट्री दिस आयरन ओर इज यूज. ओके, मेजर कैपिटल और मशीनरीज आर बिल्ड बिकॉज ऑफ दिस आयरन ओर ओनली. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स. रिटन हियर, डन ऑफ साउथ अमेरिका. ठीक है, चलो नेक्स्ट. We did of Australia also. चलो एक बार देख लेते हैं. We did Australia map. Okay, resource में we have done of Australia specifically, but you will remember this Pilbara region. We have written in the notes also. ठीक है, Pilbara, and write this Kulianobing. Second and first Pilbara and second one Kulianobing region. ठीक है, this region. ये तो गोल्ड के लिए फेमस होगा. ये भी छोटे छोटे से रीजन है. This whole region. Okay, and third one, this is the first, second one, and third is the small resource. ठीक है, iron knob. Three places in Australia. First one Pilbara, second one Kulianobing, and third one iron knob. Getting? This is important resource, that why we are doing each and every place specifically continent wise. Okay, homework for you. You have to find out which country is having largest resource of iron ore and which country is producing the largest. ठीक है, there is a difference in having the resources and which is doing maximum production. South America. ठीक है, प्रोडक्शन में नहीं है, रिजर्व्स किसके पास है? यू डू होमवर्क, आई एम गिविंग होमवर्क. लार्जेस्ट वो रिजर्व बताया वहां पे. ठीक है, कंट्री वाइज स्पेसिफिकली बताना, कॉन्टिनेंट वाइज या कंट्री वाइज. विच कंट्री इज हैविंग, कंट्री वाइज स्पेसिफिक, नॉट कॉन्टिनेंट वाइज, कंट्री वाइज. ओके, विच इज हैविंग द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर एंड विच कंट्री इज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम. ओके, देयर इज अ डिफरेंस इज हैविंग रिसोर्स एंड प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी. ओके, सो वी हैव डन दिस आयरन ओर. ओके, आयरन ओर इज कंप्लीट. Now there is a single map. This is what? Coal. Achha, how coal is produced? Anyone knows coal? How we get the coal? Volcano. Volcano? Yes, decomposition of mainly plants. Plants material, what they get buried. ठीक है, buried, and because of heat and pressure and huge temperature is there, what happens? This will in years, thousands of years, it will get converted into coal. Okay, the simple coal from wood or plant based materials. Okay, when they get trapped beneath the earth's surface, this led to the formation of coal. Okay, there are 4 major types of coal. 4 types. ठीक है, 4 types. First one, anthracite. They have 80 to 95% of carbon component. Very good coal.
what? Bitumen. Second one, anthracite, bituminous. They have 60 to 80% of carbon in them. ठीक है? Peat. Third, no, lignite. Peat last one. Lignite. They have 40 to 60%. Okay, and the fourth one is this one you can say good. This is average or near to poor. And peat, fourth one is peat. This is not fully converted into coal. Okay, this is less than 40% of carbon. ये ज़्यादा pollutant ही होते हैं, कार्बन कम होता है, more pollutant in this peat, so it is poor quality of coal. ABPL, ठीक है, ABLP, ओके. 4 टाइप्स ऐसे याद कर लो आप, ABLP. दो PL नहीं आएगा, LP, lignite then peat. Getting the 4 categories? Anthracite, bituminous, lignite and peat. ठीक है? It's been buried for a long time, huh? Yes, hundreds and millions of years. Then it get converted into coal. It takes time. If we do short time, so we can make charcoal, no? In short time, we will get this peat. No, like we can make like heat plus pressure plus, plus temperature. That means it can come out like Coal, हाँ, coal also, हाँ. That koila we get. charcoal. हाँ, हाँ. चलो, now we will look it into the map. Okay. Here, first North American continent.